Let's just put it on and see how chitta I'm gonna get. देखते मैं कितनी चिट्टी होती हूँ. Assalamu alaikum beautifuls, how are you today? Do let me know in the comment section that how are you doing today. So in today's video I'll be testing another sheet mask. As you have seen the thumbnail, it is a seaweed sheet mask. These are the real, you can say, seeds of seaweed, or it apparently gives you a kind of whiteness that is out of this world. Seriously, I'm gonna put pictures here that you can see. Okay, when you activate these seeds, they give you an amazing whiteness. Now seaweeds are basically humectants. They draw moisture from the environment and keeps your skin healthy and moist. अच्छा, इनके बेनिफिट्स मैं आपको साथ साथ बताती हूँ. सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि शीट मास्क को एक्टिवेट कैसे करना है. यू जस्ट नीड टू ऐड वाटर. यू कैन यूज रोज वाटर और नॉर्मल टैप वाटर. आई वुड सजेस्ट कि आप स्टार्ट करें नॉर्मल टैप वाटर से. एंड इफ यू गेट, क्योंकि अगर रोज वाटर से वैसे किसी को रिएक्शन तो नहीं होता, बट it's safe to be use it first for the water. So let's activate this sheet mask and apply on your face. So keep on watching. अच्छा जी, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि आप इसमें रोज वाटर ऐड कर सकते हैं, आप इसमें टोनर भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें नॉर्मल टैप वाटर भी ऐड कर सकते हैं. आपने बस पानी डाल के 2 से 3 मिनट के लिए इसको रहने देना है ताकि ये एक्टिवेट हो जाए. इस तरह के इसके बीट्स जो है वो स्वेल अप हो जाएंगे. एंड सीवीड्स आर बेसिकली पैक्ड विद विटामिन ई. It is also great for hydration, youthful looking skin. The amino acid in the seaweed help your skin plump up, smooth out the fine line with its anti-aging properties. And trust me, the next day I did get some very good comments on my skin that it's looking much healthier and brighter. It looks slimy and it's kind of really slimy. Yeah, let me just show you. So it looks like this. It's really slimy right now. The texture is very slimy. बहुत slimy सा हो गया. And देखते मैं कितनी चिट्टी होती हूँ. Okay, it feels so cold on the skin. It's very important to you take out the creases. क्योंकि अगर आपका मास्क इवनली स्प्रेड आउट नहीं होगा तो वो आपको इवनली वो इफेक्ट नहीं मिलेगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक आउट ऑल द क्रीजेस एंड स्मूथ इट आउट. ओके, इट्स बीन हाफ एन आवर. मुझे इतना मजा आ रहा है. इट्स स्टिल कूलिंग, इट्स नॉट ड्राइंग ऑफ, कहीं से भी ड्राई नहीं हो रहा. और इट्स फील्स सो गुड ऑन द फेस. मुझे कहीं इरिटेशन नहीं हो रही है, नथिंग. And I feel awesome. Let's take it off together and see if it's really worth buying product or not. Ew. यहाँ नोज के वजह से थोड़ा सा ड्राई हो गया. Ew. Yeah, it's one active and it's less mess. आपको रॉ फॉर्म में जिस तरह मिल जाए तो उसको बनाकर चिपकाना इट्स रियली डिफिकल्ट. बट इस तरह के शीट मास्क के ऊपर लगाकर to apply on your face, it's really good. And yeah, I feel good. And I'm gonna show before and after picture right over here. And I have already done the cleansing part. Cleansing मैंने कर ली थी, उसके बाद ही मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट की. So then I applied and my face feels so fresh and my lines and pores look shrink, seriously. And I love this product. थोड़ी सी प्राइस थोड़ी सी प्राइस के मामले में हाई है. And otherwise it's amazing product. If you have an event to attend and you want something really anti-aging or whitening effect, then I would totally recommend this product. You can definitely buy. मैं face wash करके आती हूँ and I'll do keep this in mind. And I have said many times that always apply a moisturizer after the sheet mask to lock in the treatment we just give to our face. And one more thing I wanted to share, that do apply a good facial oil. So when and oils always comes आफ्टर द मॉइस्चराइजर्स. ठीक है, पहले आपने मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है, फिर आपने किसी भी किस्म का फेशियल ऑयल जो है वो अप्लाई करना है. मैं यहाँ पर FW ऑर्गेनिक्स का यूज कर रही हूँ. दिस इज एन अमेजिंग फेशियल ऑयल. ये रोज ऑयल है और इट्स बीन हेल्पिंग मी सो मच. बट डू कीप दिस इन माइंड दैट आई हैव एन ऑयली स्किन. आई एम एन ऑयली स्किन गर्ल एंड आई यूज टू रन अवे फ्रॉम ऑयल्स. बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज द करेक्ट ऑयल. Yes, correct oil for your face and it gives you amazing benefits. ये आपकी स्किन के ऊपर एक ऐसा बैरियर बना देता है कि आपके फेशियल ऑयल्स और इस ऑयल के दरमियान में कोई बैक्टीरिया नहीं आता. यस, और उससे आपको पिंपल्स नहीं बनते. इट्स बीन हेल्पिंग मी सो मच. वरना मेरे माथे पे ना तो कोई ना कोई कलंक का दाग लगा ही रहता था, सीरियसली.
but these facial oils are amazing. So yeah, this is a wrap. Hope you like my video. If you like, then don't forget to give it a thumbs up. I love it, and I'm gonna definitely like my video this time, and subscribe to my channel, and do hit this icon so we can get connected. And I will see you in my next video. I love this.